Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Respected participants, I'm sure that I'm audible and the screen is there. So, without wasting even a single second, in today's discussion, we are going to discuss two important sections. In first section, we will definitely talk about the important questions that been the part of previous interviews from three next literary examinations. We will discuss those questions that been the part of previous questions from the Merchant of Venice, Tempest, and Julius Caesar. Okay, let me paste the questions in front of you so that we can discuss these questions. I'm sure that the questions are there, and here we go. The very first question that we are going to talk about is Bassanio's marriage with Portia. But before proceeding further, before talking about Merchant of Venus, I am assuming that you guys are done with the summary, with the basic details of the Merchant of Venus. In case you haven't gone through the details, definitely it will be really difficult for you to understand the basics of Merchant of Venus without that. In the second section of today's session, we have a mock interview of Mr. Bilawal. I'm sure Mr. Bilawal will join us till then. So, without any delay, let's talk about The Merchant of Venus. So, how many of you have read the play, Merchant of Venus? How many of you are done with the reading The Merchant of Venus? Well, meanwhile, you guys are typing, Shafkat is there. In Merchant of Venus, we have a very amazing character, and that is Bassanio. Bassanio is very amazing character, and Bassanio is trying his level best to get married with Portia. But from the very beginning, there are the problems, और उनकी शादी नहीं हो सकती है. And the other thing is that कि पोर्शिया जो है वो खुद से फैसला नहीं कर पाती है कि वो उसको शादी करनी है या वो किससे शादी करेगी, और उसकी रीज़न जो है वो आप जानते हैं, सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है. सो पहला क्वेश्चन जो है जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बेसानियस मैरिज. पोर्शिया की ये प्रॉब्लम कि जिसमें वो अपने हस्बैंड को खुद से सेलेक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके हस्बैंड के लिए जिसने भी आना होता है, द रीजन इज दैट पर्सन हैज टू चूज बिटवीन 3 कैस्केट्स. ओके, सो एक जो है वो 3 अदर कैस्केट्स जो हैं, एक में पोर्शिया की पोर्ट्रेट है, और जो उसको कामयाबी से विन करेगा उसी के साथ शादी हो. एंड इट इज ट्रू कि बोसेनियो जो है वो उसको विन कर लेता है और वो रिडल को सॉल्व करता है. लेकिन आपको ये बताने की ज़रूरत है, अगर आपको इंटरव्यू में इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं कि बोसेनियोस मैरिज विद पोर्शिया, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या थे, आपको इसमें एंटेनियो की तरफ से, जो इसका दोस्त था, उसकी तरफ से दी गई इसके लिए सेक्रीफाइस का भी जिक्र करना है. आपको ये भी बताना है कि वो कौन से जो है वो कैस्केट को सिलेक्ट करता है. आपको ये बताने की ज़रूरत है कि रिडल जो है वो उसके अंदर जो है वो क्या-क्या था, कि द वन हैज़ टू चूज़ बिटवीन द गोल्ड, द सिल्वर कैस्केट, या लीड की जो कैस्केट थी. सो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है. ये तो बेसिक चीज़ें होंगी जो आप बताएँगे. अब जो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में जो इनर डिटेल्स हैं वो ये हैं कि Bussanio की जो choice है, that is giving us some signals, that is highlighting something. And when we talk about the symbolic importance of the choice of Bussanio, that means he is indicating that he is a clever person. So Bassanio is a clever person, and William Shakespeare is giving the very importance to this character, because Bassanio is not easily distracted by all the superficial things. और वो लीड की कैस्केट जो है उसके ऊपर जाता है, और लीड की कैस्केट के ऊपर जो पे कोटेशन है, अगर आपको याद रह सके तो वो भी आपको मेंशन करनी है. यू डेट चूज नॉट बाय द व्यू, चांस एज फेयर एंड चूज एज ट्रू. सो हमारे पास जो है ये डिटेल्स हैं. द थिंग इज दैट व्हेन समवन इज आस्किंग यू अबाउट द मैरिज, you need to briefly talk about the character of Portia, and you need to talk about the witty character of Bassanio.
एंड इनफैक्ट ये दोनों के दोनों करेक्टर्स जो हैं वो ऐसे करेक्टर्स हैं जो बहुत तेज हैं, जो बहुत विटी हैं, जो बहुत क्लेवर हैं, और आपको इनका इन डेप्थ एनालिसिस करना होगा, आपको इन डेप्थ इनको डिस्कस करना होगा. Okay, so these things are going to help you. Okay, the second question is, explain these lines. I do expect return of thrice 3 times of the value of this bond. अच्छा जी, अब हमारे पास जो हैं ये लाइनें जो हैं वो कब आई, किसने ये कहा, और क्या जो है वो इसके पीछे स्टोरी है. आपके इंटरव्यू में जब कभी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, आप तभी जब आप ये कहते हैं कि मैंने इस टेक्स्ट को, इस प्ले को बाय टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, ओनली देन योर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट दे आर गोइंग टू मेंशन द लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट, और जिसके ऊपर आपको बात करनी होती है. अब ये लाइनें जो हैं वो, आई डू एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ थ्री टाइम्स द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड. दैट मीन्स कि अब हमारे पास जो है कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एंटेनियो की बात कर रहे हैं. एंटेनियो जो हमारे पास इसका बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है मर्चेंट ऑफ वीनस ने, जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता है. एंटेनियो जो है वो एक बॉन्ड जो है वो साइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है शाइलक के साथ. उससे बेसिकली वो कुछ लोन लेता है. शाइलक जो है जब इसको लोन देता है तो वो ये कहता है कि मैं तुमसे लोन जब वापस लूंगा, अगर तुम वापस नहीं कर पाए तो मैं क्या करूंगा कि पाउंड ऑफ फ्लेश दूंगा. ठीक है, अगर तुम जो है रिटर्न नहीं कर पाओगे, दैट मीन्स यू विल हैव टू गिव मी द पाउंड ऑफ योर फ्लैश. अब द थिंग इज दैट कि ये हमारे पास सिचुएशन उस वक्त बनती है कि जब उसको ये लगता है, एंटेनियो को लगता है कि ये इस लोन की बात कर रहा है, लेकिन मैं तो आई डू एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड. बोसानी वाला कि जो इसका दोस्त है वो इसको मना भी करता है कि यू शुड नॉट गो फॉर दिस, एंड ही इज अ बिट हेजिटेट. He is urging Antonio that you should not accept these dangerous terms, but the thing is that उसको लगता है कि I will be able to return back this loan. लेकिन एंटोनियो जो है हमारे पास, इससे पहले हमें ये भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि एंटोनियो इससे पहले जब हमें दिखाया जाता है, वो एक बड़ा रिच किस्म का पर्सन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर खुशहाली रहती है, जो पैसे वो इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर ठीक ठाक उसको रिटर्न्स मिल जाते हैं. लेकिन अब क्या होता है, इस दफा वो रिस्क लेता है लेकिन वो लोन वापस नहीं कर पाता है. सो ये हमारे पास स्टेटमेंट उस वक्त की है, तब है जब जो है वो एंटोनियो ये कहता है हमारे पास कि एक्ट 1 सीन 3 में से ली गई लाइनें हैं कि मैं इसको वापस कर दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील. सो इसको जो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे. और जब भी कभी आप अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात करेंगे कि आपने अपने किसी भी प्ले को उसको विद टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, यू नीड टू मेंशन कि आप कभी भी चीट नहीं करेंगे. अगर आपने किसी टेक्स्ट को पढ़ा है बट यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द लाइंस दैट योर इंटरव्यू पैनल इज आस्किंग, आपके पास एक अच्छी ट्रिक उसमें से निकलने की ये हो सकती है. आप कह सकते हैं कि सर एट दैट टाइम आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी, मैंने उस वक्त पढ़ा था और अभी मुझे ये लाइनें एग्जैक्टली आई एम अनएबल टू लोकेट दिस लाइंस, बट अगर आप मुझे जो मुझे समझ में आता है वो मैं बता सकता हूँ. आई कैन गिव यू द जनरल प्रेजेंटेशन. ओके, so done with the second question. The third question is about the symbolic importance of the, yes Numan, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. Numan ने लिखा Antonio says there is much kindness in Islam. Yes, very good for that. Okay, talking about the third question, what is the symbolic importance of 3 caskets in the play? Remember participants, विलियम शेक्सपियर के प्लेज इतने भी आसान समझना नहीं होते हैं कि उसके ऊपर जो सरफेस लेवल पे मीनिंग है वही इनर लेवल पे मीनिंग होगा. कास्केट्स की कहानी उनके लिए जिन्होंने इसको नहीं पढ़ रखा, पोर्शिया से शादी करना कोई आसान काम नहीं था. पोर्शिया से जिसे भी शादी करनी थी उसको 3 कैस्केट्स के 3 जो है कैस्केट्स में से चूज करना था. या तो वो गोल्ड वाली ओपन कर सकता था या सिल्वर की या लीड की बनी हुई. अब ये जो तीनों की तीनों जो हैं, गोल्ड है, सिल्वर है और लीड ये है, ये तीनों के तीनों कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. ये कहानी विलियम शेक्सपियर ने सेट की है वीनस के अंदर. ये हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं लीगल सिस्टम वीनस का. ये हमें बताती हैं कि जिस तरह से वीनस जो है वो सिटी इस खेल के अंदर, इस प्ले के अंदर दिखाया गया है, कैस्केट जो है वो भी उसी तरह से वहां के लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं. उसी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए वहां के लोग हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंधे हैं. कुछ एथनिसिटी, कुछ लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो रेसिज्म में हैं, कुछ
एथनिक वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं, कुछ रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने कभी नहीं ये देखा होगा कि किसी का फादर जो है वो ये कहे कि मेरे मरने के बाद तुमने ये तीनों के तीनों कैस्केट्स को खोलेगा जो, उससे शादी कर लेनी। इट मींस ये जो हिडन टेस्ट है ये बेसिकली फंडामेंटली जाहिर करता है क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है क्रिश्चियन लोग इसको अच्छे से समझते हैं। इफ यू वांट टू विन पोर्शिया, आपको जो है इग्नोर करना पड़ेगा गोल्ड की कैस्केट को, आपको इग्नोर करना पड़ेगा गोल्ड की कैस्केट को। और हियर आई वुड लाइक टू मेंशन द एग्जैक्ट वर्ड्स जो कि गोल्ड की कैस्केट के ऊपर लिखे हुए थे, हु चूज मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिजायर। सो सिल्वर कैस्केट जो है उसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ है। द थिंग इज दैट कि यहाँ पे ये जो कंटेंट है ये हमें बताता है कि क्रिश्चियन टीचिंग के बारे में, ये हमें बताता है कि डिजायर जो है, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, वो आपको लेके जाएंगी अनरिलायबल चीजों की तरफ, वो और उन्हें आपने रेजिस्ट करना है। ये आपको बताता है कि अगर आपने गॉड का ग्रेस हासिल करना है तो आपको उसके लिए गोल्ड या सिल्वर की तरफ नहीं जाना है, उसके लिए आपको लीड की तरफ जाना है। सो विलियम शेक्सपियर जो है ये भी एक मैसेज देता है क्रिश्चियनिटी का। इसमें हमें ये भी एक इसकी रिप्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन मिल सकती है कि क्रिश्चियनिटी इज टीचिंग दैट जो अपीयरेंसेस की बातें करते हैं, अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसीविंग। लोगों को हमेशा उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जो उन्हें नजर आता है। ये इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। सो इन केस यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ 3 कैस्केट्स इन जो इंटरव्यू, तो आपको ये भी आप मिल सकते हैं। Portia's famous line, "The quality of mercy is not strained." Very good, Shafkat. Okay, then we have the fourth question: why William Shakespeare has used the Italian settings for the Merchant of Venice? Very technical question and very tricky question, in fact. अच्छा देखें, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है इसको इटली के अंदर सेट किया गया। अब जब भी प्ले जो है वो सेट किया जाता है, मैं आपको अक्सर ये बात कहता हूँ, अक्सर ये बताता हूँ, और आप मुझे यकीन है कि ये चीज़ें आप याद रखते हैं। कोई भी राइटर जब लिखता है तो वो वैक्यूम में नहीं लिखता है। कोई भी राइटर जब बात करता है वो हवा में नहीं करता है, उसके ऊपर असर होता है। मर्चेंट ऑफ वीनस को इटली के अंदर सेट किया गया और ये 16th सेंचुरी की बातें हैं। वीनस अगर हम उस टाइम का देखें तो हमें ये पता चलता है कि इंडिपेंडेंट था वो, अपने बहुत से मामलात में, इकोनॉमिक मामलात में, अपने दूसरे पॉलिटिक्स में वो इंडिपेंडेंट था। शेक्सपियर के एज के अंदर अगर हम सेटिंग्स को देखने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलता है कि इटली जो है उस वक्त ट्रेड का एक घर समझा जाता था। नेवल ट्रेड होती थी, चूंकि ये सारे का सारा वाटर इज एवरीवेयर, पानी ही होता था, और अभी भी शायद है, क्योंकि मैं तो नहीं गया, आपने यकीनन इसको देखा होगा गूगल पे। नेवल ट्रेड उन दिनों में बड़ी आम थी, और ये सारी की सारी सिटी जो थी ये एक मीटिंग पॉइंट का काम किया करती थी यूरोप के सेंटर के अंदर। ईस्टर्न रीजन से जितनी चीजें आती थी वीनस के, और वेस्टर्न यूरोपियन लैंड से जितनी चीजें आती थी, वो सब की सब यहाँ पे इकट्ठी होती थी। और उसकी वजह क्या थी यहाँ पे? क्योंकि शिप्स को इजी एक्सेस मिल जाते थे, और जितने भी जो वीनस के रहने वाले थे, यानी कि वेंशियंस हम उन्हें कहते हैं, एंटोनियो जो है और दूसरे लोग जो हैं, वो इजीली अपनी इन्वेस्टमेंट करते थे नेवल ट्रेड के अंदर। सो हमारे पास इस सेटिंग्स की बहुत सी वजूहात में एक ये वजह भी ये है कि विलियम शेक्सपियर करेक्टर्स को दिखाना चाहता है एंटोनियो को। विलियम शेक्सपियर हमें दिखाना चाहता है कि अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर जो ज्यूश पॉपुलेशन है वो, उनको तो निकाल दिया गया था 1290 के करीब, लेकिन उनको, और वो वापस भी नहीं जा सकते थे। 17th सेंचुरी तक जो ज्यूश थे ये वापस इंग्लैंड में नहीं जा सकते थे, और इसकी वजह से वीनस जो है वो बहुत से ऐसे नेशनैलिटीज का, बहुत से यकीन का, बहुत से अकीदों का घर बनता चला गया। और ज्यूज जो हैं उन्हें समझा जाता था कि वीनस जो है वो उनके लिए बेहतरीन शहर है। हालांकि वीनस में भी उनके लिए प्रॉब्लम्स होती थी, वीनस उनका घर था, उनका मरकज बनता चला गया, और इसीलिए और वहां पे उनको रहना भी पड़ता था। शेक्सपियर जो है अपने इस प्ले के अंदर जो है वो यहूदियों को, ज्यूज कैरेक्टर्स को दिखाना चाहता है। वो शाइलॉक और जेसिका की लाइफ दिखाना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि जब पॉपुलेशन ज्यादा क्रिश्चियनिटी की थी, लेकिन उसके बावजूद ज्यूश अपनी जिंदगी कैसे स्पेंड कर रहे थे। सो दिस इज द रीजन कि इसकी सेटिंग जो है वो वीनस है, क्योंकि वीनस जो है ये, दैट वाज द ओनली सिटी एट दैट टाइम, दैट वाज द सेंटर ऑफ द नेवल ट्रेड,
और जिसकी ईस्टर्न वीनस से और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से जितनी भी तजारत होती थी उसका ये मरकज था। ओके, आई एम श्योर कि आपको इसका मिला कि एक तो इसकी सेटिंग्स की वजह ये नेवल ट्रेड है, और दूसरा जूश वहां से एग्जिट कर दिए गए थे, उनको एग्जाइल कर दिया गया था बाय फोर्स। तो विलियम शेक्सपियर जो है वो इसलिए इटालियन सेटिंग के अंदर लेके आ रहा है ताकि आपको जूश की इनर पिक्चर को दिखा सके। आई एम अज्यूमिंग कि आपको मर्चेंट ऑफ वीनस के इन 4 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन जो है वो क्लियर हो गई। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, अदरवाइज जो है हम टेम्पस जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले है, और हम कोशिश करेंगे क्योंकि कमीशन ने अपने इंटरव्यूज जो हैं उनका स्केड्यूल भी 3 अक्टूबर से शुरू कर दिया है, तो हम मॉक इंटरव्यू सेशंस भी लेना चाह रहे हैं आज से, और आज बिलावल साहब का जो है वो इंटरव्यू भी है, तो हम चाह रहे हैं कि ज़रा इनको भी तेज़ी से वाइंड अप करें। ओके जी, टेम्पस, व्हाई टेम्पस इज कंसिडर्ड द लास्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। देखिए, एक बात तो ये है कि विलियम शेक्सपियर का ये लास्ट प्ले है भी। लास्ट प्ले होने की 2-3 वजूहात हैं। विलियम शेक्सपियर इस प्ले की वजह से जो है बड़ा मशहूर है। मशहूर तो वो बाकी प्लेस की वजह से भी है, लेकिन जो इस प्ले का मरकज़ी कैरेक्टर है हमारे पास जो है, कौन है इसका प्रोटैगनिस्ट, कौन द टेम्पेस्ट का? व्हाट द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द टेम्पेस्ट? बड़ा फेमस पर्सन है। मैजिशियन भी समझा जाता है। वेरी गुड, प्रॉस्पेरो। अच्छा, आपने देखा प्रॉस्पेरो जिस तरह से अपने मैजिशियन को, अपनी बुक्स को, सब चीजों को एंड पे आके छोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर की कलम में भी जादू था, वो जो भी लिखता था मशहूर हो जाता था, फेमस हो जाता था, दुनिया पढ़ना पसंद करती थी। और टेम्पस इसका लिखा हुआ वो आखिरी खेल था, आखिरी प्ले था, जिसके बाद इसने कोई भी ऐसा प्ले नहीं लिख सका जो कि फेमस हुआ। टेम्पस 1611 में पब्लिश हुआ था, और टेम्पस जो इसका आखिरी प्ले इसलिए समझा जाता है क्योंकि इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है प्रॉस्पेरो, जिस तरह से वो अपनी मैजिशियन को अपनी पूरी की पूरी जो एक बड़ी जबरदस्त उसकी जिंदगी है उसको खैराबाद कह देता है, इसी तरह से विलियम शेक्सपियर भी राइटिंग और ड्रामा की दुनिया को खैराबाद कहता है और अपने गांव वापस चला जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो दोनों के अंदर सिमिलरिटीज हैं। ओके जी, द सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन मास्क विद रेफरेंस टू द टेम्पस। अच्छा, टेम्पस जो है ना, जब आप इसको पढ़ते हैं, ये शुरू ही तब होता है जब आप देखते हो कि एक तूफान सा आया हुआ है, आपके सामने स्पेक्टेटर्स है, एक स्टॉर्म है, उसके अंदर जो है वो शिप हिचकोले खा रहा है, और बाद में जो है वो फिर आपको फौरन से एक दूसरा सीन नजर आता है जिसमें जो है वो मास्क होता है। अब बहुत से लोगों को अपने इंटरव्यू में जब मास्क के ऊपर बात करना पड़ती है, वो समझते हैं कि शायद ये मास्क जो है वो कोई दूसरा मास्क पूछा जा रहा है। समझ लीजिएगा मास्क की कहानी उतनी पुरानी है जितना रेनेसांस है। होता ये था, रेनेसांस इंग्लैंड के अंदर एक तकरीब हुआ करती थी, एक फेस्टिव हुआ करता था, एंटरटेनमेंट होती थी, हर तरह की कौमें एंटरटेनमेंट किया करती थी, और वो थी म्यूजिक। ये लोग म्यूजिक सुना करते थे, डांस किया करते थे, कॉस्ट्यूम्स पहना करते थे, ड्रामे किया करते थे, लेकिन ये क्या करते थे, चेहरे पे मास्क लगा लेते थे। अब यहाँ से हमारे पास जो है सिंगिंग और डांसिंग के जो हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म्स निकलती चली आई, और इसके बाद इवन एंटी मास्क जो है उसमें भी ड्रामेटिकल अपीयरेंसेस होना शुरू हुई, और एंटी मास्क के ऊपर भी एक पूरी की पूरी टर्म बनी, और शेक्सपियर प्ले के अगेंस्ट जो है वो फिर लोगों ने एंटी मास्क भी कई किस्म के जो हैं वो एंटरटेनमेंट फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। लेकिन हमें यहाँ पे मास्क को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है टेम्पस जो है रेफरेंस में। द मास्क को जब हम द टेम्पस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये वो वाला मास्क नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये कोई म्यूजिक की बातें नहीं कर रहा है, ये वहां पे कोई ऐसा मास्क नहीं है कि जिसमें डांसिंग हो रही है, बल्कि ये तो किसी और चीज से इसके एनालॉजी के तौर पर यूज कर रहा है। ये हमें दिखाने की कोशिश करता है कि शायद ये जो मास्क है ये कोई कॉपी है उसकी, जो है वो मोक मास्क जो है वो हमारे पास है। अब ये किस तरह से है, अभी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, द टेम्पस को जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको प्रॉस्पेरो की इंटेंशन, जो इसका मरकजी किरदार है, उसके इरादों से यही लगता है कि उसको रिवेंज लेना है, उसको बदला लेना है कि जिन्होंने उसकी हुकूमत गिरा के उसके हुकूमत को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब उसके लिए वो क्या करता है, अब उसके लिए उसको पोजीशन लेनी है ड्यूक ऑफ मिलन की, वगैरह वगैरह स्टोरी आप खुद पढ़ लीजिएगा।
मैरिज होती है और बाकी चीजें सारी की सारी होती हैं। यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि प्रॉस्पेरो का सारी चीजों को मैस्क करना, अपनी एबिलिटीज को मैस्क करना, इसके अलावा मिरिंडा को टीच करना और सारे के सारे प्ले के अंदर मिरिंडा जो है उसको इंस्पायर करना, जो 4 के 4 एक्ट जो है वो क्रिएट करता है। वो मिरिंडा को जो चीजें दिखाना चाहता है वो वही रियलिटी दिखाता है जो कि वो चाहता है। अगर किसी ने इसको ढंग से पढ़ा हो तो वो ये जानता है कि जो मिरिंडा है हमारे पास मरकजी किरदार है प्रॉस्पेरो के बाद, वो इसमें इसकी डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करती है। वो उसको सिखाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चैस्टिटी। So he is teaching the lessons, primary lessons to the Mirinda throughout the play. So हमारे पास यहाँ पे मास्क से मुराद वो या मास्क है जो कि प्रॉस्पेरो, जो कि इसका सेंट्रल कैरेक्टर है, वो यूज कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो मिरिंडा को, जो इसका सेंट्रल हमारे पास हीरोइन है, उसको सिखा रहा है कि व्हाट शी इज सपोज्ड टू डू। ठीक है सर। इसकी मजीद डिटेल्स जो हैं अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये एक सिंगल इंटरप्रिटेशन जो है वो इसकी मोर देन इनफ है। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट द ज्योमेट्रिक यूनिटीज। अक्सर पीपीएससी की में एक क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन होता है ड्रामेटिक यूनिटीज के बारे में। इंटरव्यू में भी इस पे बात होती है, जब भी कभी आप टेम्पस पे बात करते हैं। ड्रामेटिक यूनिटी से मुराद क्या होता है? सबसे पहले एक चीज ये समझ लीजिएगा कि विलियम शेक्सपियर किसी किस्म की यूनिटी या ड्रामेटिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता था। अगर हम उसकी और भी ट्रेजेडीज या कॉमेडीज या कुछ भी प्लेस को पढ़ने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि ये जो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शंस है ना, विलियम शेक्सपियर इन सबसे बागी था। उसको ये लगता था कि मेरा काम इन चीजों को फॉलो नहीं करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं देखना है। वो बात करते करते आपको मीलों दूर लेके जा सकता है, यानी कि यूनिटी ऑफ प्लेस को रिवोक कर सकता है। वो बात करते करते आपको जो है वो रियल टाइम में भी लेके आ सकता है और कहीं और भी लेके जा सकता है। सो हमारे पास जो है यूनिटी जो है वो इसमें फॉलो नहीं करता है विलियम शेक्सपियर, जो है वो नॉर्मली नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे टेम्पस के अंदर विलियम शेक्सपियर हमें नजर आता है कि वो यूनिटीज को, 3 यूनिटीज को फॉलो करता है। इस प्ले के सारे जो एक्शन हैं दे आर यूनिफाइड इनटू अ बेसिक प्लॉट। Whenever we try to explore the Prospero struggle, that is the protagonist of the play, what Prospero is doing throughout the play, he is trying to win the dukedom. So वो भी एक जगह पे है। जब हमारे पास दूसरी चीजें हम देखते हैं कि जब वो ही इज टॉकिंग अबाउट द न्यू वर्ल्ड, तो एक हमारे पास ऐसा प्ले है विलियम शेक्सपियर का जो कि द टेम्पस है। और टेम्पस के अंदर हमें विलियम शेक्सपियर इन 3 यूनिटीज को किसी हद तक जो है वो फॉलो करते हुए नजर आता है। और इसकी वजह क्या हो सकती है? मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज शेक्सपियर वाज सेइंग गुड बाय टू द वर्ल्ड, शेक्सपियर वाज सेइंग लाइक गुड बाय टू द एकेडमिक वर्ल्ड, द लिटरेरी वर्ल्ड। सो मे बी दैट इज द रीजन कि अब जो है वो इन तमाम की तमाम चीजों को वो एक टच देना चाहता है। ठीक है। और वो अब अपने ऑडियंस को एक डिफरेंट काइंड देना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि मेरे लिए इस तरह का लिखना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं लिखना नहीं चाहता था। सो मोस्ट प्रोबेबली दीज आर द रीजंस। बट यस, ड्रामेटिक यूनिटीज जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करती हैं। और वो एक जो बड़ी मशहूर चीज है, बड़ा मशहूर आंसर है कि वो 12th नाइट में है, वो गलत है, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक एसोसिएटेड विद द टेम्पस? जब आप इस बुक को डिटेल से पढ़ते हैं तो यू विल कम टू नो कि इस बुक से इंस्पायर होके एल्डस हक्सले ने एक किताब लिखी थी, द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। किस किसने पढ़ रखी है ब्रेव न्यू वर्ल्ड को? हक्सले की ब्रेव न्यू वर्ल्ड को कितने लोगों ने पढ़ रखा है? वेरी गुड नुमान। किस किसने पढ़ रखा है ब्रेव न्यू वर्ल्ड को? हक्सले की बुक जो है वो जस्ट समरी। अच्छा देखिए, अब ब्रेव न्यू वर्ल्ड को जब आप पढ़ते हैं ना, यू विल कम टू नो the story of that particular book, each and everything is highly inspired and motivated by the Tempest. The novel and the phrase like from the Tempest, Brave New World, ये सारी की सारी चीजें associated हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो हमारे पास इसका जो आंसर है, what is the name of the book associated with the Tempest, that is कि हमारे पास हक्सले की किताब है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो इसके साथ associated है।
What is the significance of the title? One of the very important questions whenever you talk about the tempest. देखो tempest के दो तरह के मीनिंग्स होते हैं. जब भी आपसे कोई significance आपके इंटरव्यू में पूछेगा, आपने दो तरह से जस्टिफाई करना है. पहला, आपने बताना है कि लिटरल उसका क्या मीनिंग हो सकता है, और दूसरा मेटाफोरिकल उसकी कनोटेशंस क्या हो सकती हैं. अब जो टाइटल है हमारे पास द टेम्पेस्ट है, उसका हम लिटरल मीनिंग देखें तो हमें पता चलता है फिजिकल स्टॉर्म की बात कर रहे हैं, और वो हमारे पास जो है वो सीन मौजूद है. लेकिन अगर हम दूसरा मीनिंग देखें द टेम्पेस्ट का, इस खेल के अंदर, इस प्ले के अंदर जितने भी करैक्टर्स हैं, सारे के सारे करैक्टर्स जो हैं वो एक स्टॉर्म की तरह हैं. इस तरह से, जिस तरह से उनके अंदर स्टॉर्म्स, उनके जज्बात जो हैं समंदर में उठती लहरों की तरह हैं. वो कभी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं, कभी उनको मैजिकली उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है. तो इस तरह से ये सारे प्ले प्रोसेस पर देखते हैं. सो द टेम्पेस्ट में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन, द एक्ट 1 से हमें ये देखने को मिलता है कि नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं बचता है. विलियम शेक्सपियर जो है इस खेल को इसलिए भी टेम्पेस्ट कहता है क्योंकि अब वो अपने ऑडियंस को एक नई फॉर्म दे रहा है, जो मैंने पहले एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया. और इसके ज्यादातर जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया इसको, जो है उन्होंने बिल्कुल उनकी एक्सपेक्टेशंस से कि ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि विलियम शेक्सपियर शायद ये दे नहीं सकता. लेकिन इसने उनकी एक्सपेक्टेशंस को रॉन्ग साबित किया. ठीक है. और इसने प्रॉस्पेरो जैसा कैरेक्टर दिया जो कि जिसके गिर्द सारे का सारा खेल जो है वो घूमता है. ठीक है जी. सो दो चीजें मैंने बताई. टाइटल जो है वो एक फिजिकल स्टॉर्म की बात करता है जो पहले सीन के प्ले के अंदर है. दूसरे में वो कैरेक्टर्स के पैशंस की बात करता है कि किस तरह से वो मूव ऑन करते हैं. तीसरा, ये मैजिकली ट्रांसफॉर्मेशंस को जाहिर करता है. और चौथे नंबर पे ये बताता है कि किस तरह से जब एक तूफान के बाद सुकून आ जाता है, वैसा ही सुकून आता है प्रॉस्पेरो की जिंदगी में, वैसा ही सुकून आता है विलियम शेक्सपियर की जिंदगी में, क्योंकि वो दोबारा स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में चला जाता है, और इस तरह से उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पे आ जाती है. ठीक है जी. सो आई एम श्योर कि टेम्पेस्ट के मुतालिक जो हैं कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं ये भी आपको क्लियर हैं. यहाँ तक ये सारे के सारे अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे, आई एम श्योर कि आप जो हैं अपने इंटरव्यू के तमाम क्वेश्चंस को बड़े ढंग से जो है वो देख सकते हैं. The last play of today's discussion, and then we are going to talk about the MOOC interview, जूलियस सीजर. अच्छा, जूलियस सीजर जो है, एक तो जूलियस सीजर के बारे में, first Tempus Prospero was dethroned, second Tempus Prospero will be able to sit on throne. Oh yes, these may be two different interpretations if you are interpreting the very statement, Noman. The very first thing, Julius Caesar in the history, हमारे पास टाइम कम है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी डिटेल्स में देख लीजिएगा. जूलियस सीजर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, जरूर देखिएगा. रोमन जर्नल था, स्टेट्समैन था, बहुत से लोगों को इसका पता है. और इसकी अगर आप डिटेल्स में चले जाएं तो 100 BC से भी पहले की डिटेल्स हैं. जितने भी इवेंट्स होते हैं रोमन पब्लिक को और लेके आप बात कर लें, जिसमें जो है वो डिमाइज होता है उसका, या जो है वो राइज होता है, उसके अंदर हमारे पास जूलियस सीजर का नाम लाजमी आता है. ठीक है. सो जूलियस सीजर के मुतालिक जो है वो डिटेल्स देख लीजिएगा. इसका वेरी नेम जो है वो भी एक लैटिन नेम है. जूलियस सीजर के मुतालिक जो है मुख्तलिफ मूवीज भी बनी हुई हैं. मैं भी यही बात करने लगा था. ठीक है शफकत, तो इनको जो है वो जरूर देखेगा. सीजर न्यू he will be murdered, still he visits the Senate. Why? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जूलियस सीजर को पता होता है कि लोग उसको मार देंगे, और लेकिन फिर भी वो सेनेट में चला जाता है. अच्छा देखें, सीजर पहले ये फैसला करता है कि ही इज गोइंग टू स्टे एट होम. जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो ये जवाब समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो समरी पढ़ लीजिएगा, बाद में आपको पता चल जाएगा. सीजर जो है वो इनिशियली समझता है कि उसको रुकना चाहिए, लेकिन फिर भी, और क्योंकि उसकी मिसेस भी बताती हैं कि मैंने ख्वाब देखा था, सारी की सारी चीजें और सीन्स बताती हैं, लेकिन फिर उसको लगता है कि यार ये रुकना जो है वो किसी मसले का हल नहीं है. उसके बाद जो है वो करता है कि लोग जो हैं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में,
उसको लगता है कि जो उसकी वाइफ को जो है जो विजन्स आए हैं कि उसने ब्लड को देखा अपने ख्वाब के अंदर, वो उसका लाजमी मतलब तो नहीं है कि वो मौत ही उसका मतलब है। हो सकता है कि ब्लड का मतलब ये भी हो कि लाइफ है, कोई रिन्यूअल है किसी चीज का, ठीक है। सो दूसरे नंबर पे जूलियस सीजर जो है वो था तो इंसान ही, उसको जब ये पता चलता है कि सेनेट का प्लान ये है कि सीजर को वो फर्स्ट एम्परर बनाना चाहते हैं रोम का, ठीक है। सो पावर की थर्स्ट तो उसके अंदर मौजूद थी, पावर की इस प्यास ने उसको कन्विंस किया कि ठीक है चलो सेनेट में चलते हैं, और अल्टीमेटली उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। यस, ही वाज गोइंग टू हैव द लेबल कि ही इज अ वीक पर्सन। और आखिरी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है जी रेटरिक को लेके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज लाइंस यू शैल नॉट इन योर फ्यूनरल स्पीच ब्लेम अस। अच्छा, ये ब्रूटस जो है ना एंटोनी को कहता है, ब्रूटस बेसिकली ये चाहता है कि एंटोनी बहुत तेज और बड़ा शातिर कैरेक्टर होता है, आप जानते हैं। एंटोनी जो है वो ये कहता है कि ठीक है अच्छा किया ब्रूटस को कत्ल कर दिया, सॉरी सीजर को कत्ल कर दिया, इसको मरना ही चाहिए था। उसके बाद जो है वो ये कहता है कि मुझे भी अब लोगों से बात करने का मौका दिया जाए। रेटरिक क्या होती है? रेटरिक जो है वो एक आर्ट है, एक तरीकेकार है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें जो बोलने वाला है वो अपने बोलने की वजह से, जिस तरह से हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं जब वो बात करते हैं तो वो आपको इस तरह से शीशे में उतार लेते हैं कि आप मरने मारने पे उतर आते हैं। क्या वजह है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो वर्कर होता है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर होता है वो आपस में एक दूसरे को आप देखिए गालियां देते हुए नजर आते हैं, हालांकि ना तो इमरान खान किसी के मामे का बेटा होता है ना दूसरा उसका फूफो का बेटा होता है, बट व्हाट इज द रीजन? रेटरिक इज देयर। आप अल्फाज से लोगों को इतना जोशीला बना दें कि वो मरने मारने पे उतर आए। जिस तरह से हमारे पास काफी मजहबी जमातें इसको इस्तेमाल करती हैं प्रेशराइज करने के लिए। खुद सियालकोट में हमारे अपने सिटी के अंदर जो श्रीलंकन प्रियंका कुमार के साथ हुआ, दैट व्हाट आर द रीजंस, दो कि हम इस प्लेटफॉर्म से बात नहीं कर सकते, लेकिन रेटरिक की इससे अच्छी मिसाल और कोई नहीं हो सकती कि जब आप अच्छे भले लोगों को इतना मोटिवेट कर दें कि वो मरने मारने पे उतर आए। अब देखिए ये टेक्निक इस्तेमाल करता है एंटोनी। एंटोनी जो है वो इस स्पीच को इस्तेमाल करता है। ब्रूटस जो है वो उसे ये कहता है कि आई एम गोइंग टू अलो यू, यू कैन स्पीक विद द पीपल, बट द थिंग इज दैट यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अगेंस्ट अस। Whatever you are going to say, there will be the benefit of the conspirators. अगर तुमने बात की हमारे खिलाफ तो डेट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट, लोग कुछ नहीं कहेंगे, हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन जो है वो एंटोनी जब बोलता है तो वो सारे के सारे कॉन्स्पायरेटर्स के अगेंस्ट बोलता है, आर्ट ऑफ रेटरिक को इस्तेमाल करता है। और जो आर्ट ऑफ रेटरिक की वजह से जो कंस्पायरेटर्स हैं लेटर ऑन वो फिर भागते फिरते हैं, वो बचते फिरते हैं। एंटोनी इज गिविंग अ मैसेज, वो उसका जो मैसेज है वो मूविंग स्पीच में है, ठीक है। आपने पेट्रियट इनटू ट्रेटर पोइम पढ़ी होगी रॉबर्ट ब्राउनिंग में, पंजाब यूनिवर्सिटी के बी के सिलेबस में भी ऐड है। तो रिमेंबर जो है अगर आपने उस पोएम का एनालिसिस किया हो, व्हाट यू विल कम टू नो पेट्रियट इनटू ट्रेटर का मतलब क्या है। कितने लोगों ने पढ़ रखी है? इसमें से रेफरेंसेस आप दे सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड द पोएम पेट्रियट इनटू ट्रेटर? ओके, ओके, जस्ट 2 or 3 पीपल आर देयर। वेल उसमें ना अगर आप देखें तो जो थर्ड सेंटेंस है ना उसका, अलाक it was I who leaped at the sun to give it my loving friends to keep. Nothing man could do have I left undone, and you see my harvest what I reap. This very day no a year is done. So हमारे पास जो है पहला भी अगर आप देखें ड्रामेटिक मोनोलॉग, डेफिनेटली it was roses roses all the way. So the house roof seemed to heave and sway. The church spires flamed such flags they had a year ago on this very day. The thing is that when you are going to talk about in moving way, that means that is the rhetoric. और इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था, किसने इस्तेमाल किया था? अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल ने इसके ऊपर जो है वो बात की थी। ओके जी, हम जो है वो 3 एलिमिनेशंस पर बात कर चुके हैं। जिन लोगों के इंटरव्यूज 3rd of October से हैं
वो हमारे पास जो उनके साथ लिस्ट शेयर की गई है उनमें से फर्स्ट 30 से 35 तक पेज ही तैयार करेंगे, ठीक है? और कोशिश करेंगे कि वो उनकी समरीज को, कैरेक्टर्स को, थीम्स को, सेटिंग्स को, मोटिव्स को, इन तमाम चीज़ों को बड़े ढंग से समझ के जाएँ और राइटर्स के बारे में। बाकी जिनको मैक्सिमम जितना टाइम मिलेगा, डेफिनिटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिमेनिंग पेज एज़ वेल। बट ये जो है वो हमारे पास ये चीज़ें जो हैं, ये आपने देख के जानी है। Proceeding further with our first mock interview, that is with Mr. Bilawal. Mr. Bilawal is with us. Mr. Bilawal, you are requested to please unmute yourself. Assalamu alaikum, sir. I'm audible. Walaikum Assalam, Bilawal. Yes, you are. The gentleman, how are you? I'm fine and I'm going good. How are you, sir? Thank you so much. I'm perfectly well. Should we proceed further with the formal discussion, Bilawal? Yes, sir. Sure. Okay, Bilawal, you are from Sialkot, if I'm not wrong. What is the old name of your city, Sialkot? Yes, sir. I couldn't listen your question. Can you repeat it, please? From your profile, it is evident that you're from Sialkot. So what is the old name of your city? What is the old name of your city, Sialkot? Okay. The old name of city Sialkot has been said to derive from a Greek word, which is Sagala. Okay. Yes, sir. So, gentlemen, why your city is famous for? What is the specialty of Sialkot? Well, the specialty of Sialkot is export-oriented economy and its factories. Okay. Like there are a lot many factories in Faisalabad, but Faisalabad is not as famous as Sialkot is. Particularly yes, when we talk about the GDP of the Pakistan and the Sialkot. Yes, sir. The economy of Sialkot is export-oriented, and that's why it contributes a lot to the GDP, and around $4 billion. Okay. Do you know that Narwal was once the part of Sialkot? Yes, it was a part of Sialkot once. And when it was separated and renamed as a separate district? It was separated in, I don't know the exact year, I don't remember it, but it was separated in, you can say 1990s, I guess. And it was the era of 1990s, I guess. Yes, sir. But I don't exactly remember the date of that removal. Okay. Gentlemen, Sialkot has been noted by a lot many international magazines, like it is the manufacturing hub. Okay. Talking about the exports, Sialkot exported a lot many billion worth of goods and all the things. What do you know about the export capability of Sialkot? Like, what is the role of Sialkot dry port in the export of Sialkot? And which magazine has time and again mentioned that Sialkot is exporting and playing its role in the international and the national GDP? Okay, sir. First of all, coming to the last question, the magazine's name is Economist, and it has named Sialkot as a hub of exporting or manufacturing. Secondly, coming to the first question, the main exports or the things for which Sialkot is famous worldwide is sports, manufacturing sport items like clothing items of sports. Secondly, the surgical instruments. These two are the main tenets of the export of Sialkot. Thirdly, it also has a good reputation in making instruments related to Scottish bands, flutes, like these things. Yes. Fair enough. Sialkot is famous for a lot many notable personalities. Mention the name of any 5 personalities of your choice. Okay, so I would the like literary one, literary not the one. Okay, so I would like to start with Allama Muhammad Iqbal, Umaira Ahmed, Tawfiq Rafat, okay, Kuldeep Nair, and Faz Ahmed Faz. Okay. And yes, sir. Which one is your favorite one? My favorite one is actually Allama Iqbal,
because of the influence he has on our city and on myself too, to some extent. Allama Muhammad Iqbal. The very Yes, sir. name Allama Muhammad Iqbal, he was born there in Sialkot. So, where Iqbal Manzil is located in Sialkot? Iqbal Manzil is located in the area of nearer to Kashmiri Bazaar, or it's actually in the Kashmiri Bazaar and near to a mosque which is called Do Darwaza Masjid. So it's a very, you can say, antique and one of the most and one of the oldest places of the city. So it is located in the Kashmiri Bazaar, actually. Okay, so Allama Iqbal wrote a lot many books. So how many books you have read of Iqbal, your city fellow? Okay, sir. So I haven't read all of his books or much of his books, but I happen to have read his one book of poetry or a collection of poems, which is Shikwa Jawab Shikwa. Shikwa, Jawabe Shikwa. So what we are going to translate when we translate Shikwa and Jawabe Shikwa in English, what do you think the title would be? Complain for Shikwa and answer to complain. That would be Jawab Shikwa, as far as I guess, sir. Shikwa, Jawabe Shikwa. Lines that you remember from Shikwa and then Jawabe Shikwa, maybe a couplet is more than enough for us. Sir. Okay, sir, I had remembered one of the couplets. In fact, it had a very good influence on me, but actually I read it like a couple of years ago, so I don't remember. But I do remember that it was about the prayer of Fajr. That why don't you wake up in the prayer of Fajr? So I remember this thing, but I don't remember the exact couplet. Sorry. Okay, when we say क्यों ज़ियाकार बनूं सूदे फरामोश रहूं फिक्र फरदा न करूं महवे हमें दोष रहूं नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं हमनवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं. What Iqbal is talking about, explain what is the theme behind this, like why is talking about the nightingale and the once again the flower is there, like I'm a flower, why should I remain silent? So what is the theme, what is the philosophy of Iqbal behind these lines? Okay, first of all, the things he has discussed, Bulbul and the flaws, they are a bit romantic in general literature. But Iqbal has transferred the meaning from romantic towards didacticism, and he's asking and telling that why should I remain silent even if I am a flower? I should spread the message of myself, the message of Khudi through my. What is the definition of romanticism? What romanticism is? You have mentioned the word romanticism. What is Yes. romanticism? Romanticism is a literary movement that focuses on the value of heart over mind, the value of emotions over rationality, and a certain element of rebellion. So these are some of the main features of the movement of romanticism. Okay, so can we call Pakistan Tehreek-e-Insaf is a movement? No, it's not a movement. It's a political party, but its name has that word. But technically, it's a political party. If I want to bring a change in the society, so is it possible that I can initiate a movement? The movement may be initiated by a single person? No, sir, a movement cannot be initiated by a single person unless or until that person is a very powerful man, and which is a very rare case. Because movements form when people come together and they grow with the process of time, just like the movement of romanticism. Okay, well, gentlemen, we are talking about romanticism, so it seems you are interested in romanticism. So when we talk about, when we say romanticism, romanticism was a reaction of an age. What is the name of that age? It was a reaction against the age of neoclassicism. Okay. Yes, sir. It was the age of neoclassicism. And yes. what is okay? So what is the definition of romanticism given by William Wordsworth? Can you repeat your question, sir? I couldn't listen. What is the definition of romanticism by William Wordsworth? Okay, romanticism has been defined by William Wordsworth in his book, in which he talks about the poetry. He says that
Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings, of emotions recollected in tranquility. Very good. So he has told Very about. good. So what do you mean by what do you mean by spontaneous? Spontaneous is something which is not, you can say, planned, or which is not formed through reason. It just comes in the form of intensity. So spontaneous is something random, or something very, you can say, unexpected. And gentlemen, you have the word overflow. So how you're going to justify overflow? Is there any relevance to the new classicism? Because Yes. poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. Why not flow? Why overflow? Okay, so this one word overflow tells us a lot about difference between these two movements. The romantics believed in the overflow of the emotions, whereas the classics were not with the overflow. They believed in the superiority of the mind over this flow to regulate this flow. So this was a difference between neoclassics. They regulated this flow of emotions and constricted it, whereas the classics, romantics, were letting them go and making it an overflow of emotions. Okay, gentlemen, what is the major difference between S.G. Coleridge and William Wordsworth? Okay. So the basic difference between S.T. Coleridge and William Wordsworth is in their view about nature and their view about poetry. They both have different views about nature and poetry. William Wordsworth basically wrote about the beauty of nature. He talked about nature as a teacher, as a preacher, as a basic source of information. Whereas S.T. Coleridge was of that view that basic inspiration comes from within. Nature is secondary in that sense. Secondly, So any book of S.T. Coleridge that you have read? So I haven't read the book of S.T. Coleridge, but I know the name of that book, which was his literary criticism, which is known as Literaria Biographia. Sorry, Biographia Literaria. Okay, fair enough. Yes, sir. Okay, gentlemen, what is the difference between the writings of Wordsworth and John Keats? Both are the romantic poets. So what is the difference between the writings of Wordsworth and John Keats? The difference between the writing of Wordsworth and John Keats is that Wordsworth was basically a kind of a didactic poet. He has that element of didactic in his. Secondly, he was showing his own personality in his poem. He had that egotistical sublime, which was actually coined by Keats to describe him. This is the basic difference between both of them. Wordsworth was showing his own personality, whereas Keats was a pure poet. He was not concerned with his own personality. He was more like, you can say, he had that negative capability. Another term introduced by John Keats. Okay, gentlemen, if I say Keats used much more complex language to describe and express his ideas, whereas Wordsworth used simpler language in his poems, do you agree with this statement? Bilal, Yes, sir. am I Yes, sir. audible? You're getting... Yes, sir. So the question is that. Yes, sir. I do agree with this statement in this respect that Wordsworth was of that view that language should be coming from the language of the rustic people, from the simplistic people. So in that sense, we can say that his language was simple as compared to other poets, including John Keats. Have you read literary ballads? Sorry, lyrical ballads, not literary ballads. Lyrical ballads. Have you read lyrical ballads by Wordsworth and S.G. Coleridge? So, sir, I haven't read lyrical ballads, but I have read about lyrical ballads. Why William Wordsworth published preface to lyrical ballads after lyrical ballads? Okay, first he published the lyrical ballads as an experiment, and secondly, in his preface to lyrical ballads, he explained the process that why he published the lyrical ballads as an experiment. He was just testing the new way of writing poetry as against to the old classical method. So that's why he published preface to explain and to give his own viewpoint about his. Yes, sir. Fair enough.
What is the definition of ballad when we talk about ballad? Ballad is basically a kind of a song in the form of poetry that tells a story. Okay, ballad is a form of poetry that is telling you a story. Yes. Okay. It's a Are you form. It's in sure the form about of. that? It's in the form of a song basically, and it's lyrical as well. Okay. So what is the definition of lyrical? What is the definition of? Lyrical. Lyrical is something What is the definition? that includes or that is of lyrics, that is based on lyrics, using lyrical poetry. Okay, all right. You know. Yes. Okay, the next question is, you have mentioned all the things quite accurately. Have you read Shakespeare? Shakespeare? I haven't. Yeah. I haven't read Shakespeare from a long time, but I do have read some of his, you can say, summaries, but not the complete works. Okay, what is the name of your favorite writer then? Well, my favorite writer is Charles Dickens. Dickens is your favorite writer. Why Yes. Dickens is your favorite writer? There were a lot many other writers who were contributing in that age, but why Dickens specifically? Well, Dickens is my favorite writer mainly because of two things. The first thing is that the themes he touched upon, especially in the Great Expectations, and secondly, the way he expressed those themes, his diction and his way of telling those things. Okay. So, gentlemen, how many novels of Dickens you have read so far? Well, I have mainly read two novels with the text, The Great Expectations and The Tale of Two Cities. All right, fair enough. Thank you so much, Bilawal. And Azan is going on in your background, so we are taking a stop here. But I am going to give you the feedback, and that is the reason I am muting you. Thank you so much, Bilawal, for such a detailed insight to comment on the discussion that we have had. Bilawal, your knowledge is quite fantastic about your city. You have given all the details quite precisely. It seems you have, mashallah, prepared very well, and you have tried your level best to cover all the aspects. That's very good. The second thing is about literary personalities, and you have mentioned Iqbal. So my recommendations are try to memorize some of the verses of Iqbal, because ultimately you are supposed to talk about Muhammad Iqbal, and in case you want to go in detail, you may take some references from Muhammad Iqbal, because in your interview, if your panel is taking interest in you, you can take maximum questions from Iqbal, and you have the knowledge. You have I'm telling you beforehand that they are going to ask you the questions from Muhammad Iqbal. So you should try to prepare the basics of the Iqbal. I'm not saying to memorize the books of the Iqbal, but the basics should be there on your fingertips. Your knowledge about romanticism, though it's not your favorite area, but it's quite impressive. And you have answered all the questions, especially about the movement, the difference between the political party and the movement, and then your very definition of overflow. It seems your concepts related to history of English literature are crystal clear. That's very good. The next question, I was talking about the lyrical and the ballads. Once again, very impressively, you have mentioned and described all the things. These are the plus points. But where I think you need to improve yourself is, you, mashallah, the knowledge is there, and when knowledge is there, we try to answer all the questions quickly. And you were also doing the same. You were answering all the questions, in a second. My first recommendation is try to wait for 1 or 2 seconds. Once you have listened the question, give 1 or 2 seconds and try to understand the context of the questions. Up till now, you have mashallah, in very amazing way, you understood each and everything. But I think that it's really wise to play safely. So you should wait for some seconds, maybe 1 or 2 seconds. Once the questioner, they are done with the questions, so then you should start answering the question. Okay, that is the first recommendation. The second thing is that while answering the questions,
a lot many times you were it was very visible that you were under pressure, though the knowledge is there, but still you were trying to cope up the situation. Maybe you were because we are unable to see the circumstances where you're sitting right now, maybe some problem in your background was there, so one or two times you have to change your location. Maybe you were trying to minimize the voice, rather the voices or the of the people, and then later on the azan, you were trying to minimize that impact. So the very visible influence was there on the pitch of your sound, on like the rise and fall of your voice. So my recommendations are, try to control your nerves when you are answering. Okay, yeah. So try to control your nerves when you are doing your interview. Listen the question very clearly. You are supposed to remain confident. Like somebody is asking you about the movement, all it's well, the movement is different than the political parties. There are two basic differences. So in this way, you can proceed further. Overall, the knowledge about your city, about literature, about linguistics is, because we have not touched about, we have not talked about linguistics. So the knowledge about literature and the things that we have discussed is up to the mark. But my recommendations are, because we will evaluate you once again, and you are requested to improve these areas. Like you will perceive the questions accurately, you will not try to answer the questions abruptly, you will try to listen the question and then you are going to answer. And at the end, my recommendations are, you need to learn something, memorize something about Iqbal, or Faiz, or Tawfiq Rafat, or Umair Ahmed, because they are going to talk about these people. And because Mr. Chairman is going to talk about these personalities, so you are requested to browse the basic details of every person who's from Salcott. I'm talking about the notable people, definitely not those people who are not included anywhere in the list. Okay, if we are going to rate your today's interview out of 100, because you are from Punjab, so I'm going to rate it somewhere around 71 out of 100. Okay, the performance, though performance was extraordinary, but we are not going to cross 71. That is the maximum score. But I think when you are going to control these things, and when you are going to talk about literary personalities, you can easily touch up the highest line, that is the 78 or 80. Okay, and every single mark in your interview is going to change your destiny, maybe a lot many places on the final merit list. So you need to work more here. Okay, I'm unmuting you once again, Bilawal. In case you have any question, you may go on with that. Otherwise, that's all from my side. Okay, sir, I have to ask that the questions I answered about the romantic age specifically, were they up to the mark, all of them? Because romantic was not my favorite age. So were they satisfiable? Yes, your answers were not up to the mark thoroughly, but your answers were good. Okay, like you Okay, sir. were coping up with all the questions, but you need to understand and explore something about ST Coleridge, because Yes. I think that ST Coleridge, you have not prepared him very well. So you need to explore some basic details about ST Coleridge, the differences between ST Coleridge and John Keats, the differences between William Wordsworth and John Keats, the difference between P.B. Shelley and John Keats, and the differences of all these romantics from one another. Okay, Okay, sir. the rest of the fine. Okay, There's sir. a noise in your background, so I have muted you, Bilawal. So tomorrow we're going to take Miss Nazish Gloria, because Nazish is having her interview on 4th of October. So Nazish, if you are not available, you are requested to mention in the chat box, so that we may request another person. I may name this person for the interview. You may confirm later on in the chat box of your WhatsApp group if it is not convenient for you to confirm it right now. So okay, Imran is there. Imran, basically, Nazish is having her interview on 4th October. So that is the reason we are giving her the first priority.
So in case Nazish is not available, Imran, we are going to have an interaction with you, inshallah. Okay, Miss Nazish, you are requested to confirm your availability in the group, in your WhatsApp group. If Miss Nazish is not available, we are going to have interview with Mr. Imran Haider, and the second interview will be Mr. Ghulam Mustafa. Okay. Okay, so tomorrow we have two interviews. The first one is with Mr. Imran Haider, and the second one is with Mr. Ghulam Mustafa. Okay, so both of you are requested to prepare yourself for the interview, and hope to see you guys tomorrow, inshallah. Till then, take care of yourself, and good evening. Khuda Hafiz.